Namaste, Sitaram. Good evening, and welcome to our Satsangh this evening. Another session of connecting through bhajans. It's indeed a pleasure to be spending this time with you, albeit virtually, but we hold hands together and glorify that Supreme Being. So at this point, let's all join in invocation as we ask the Supreme to guide us and bless us to have a fruitful session and for us to have an auspicious time as well. So we fixate our minds on the form of the Lord that is most appealing to us. We close our eyes and clasp our hands and recite. Oh. 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 Om Shri Ganeshaya Namaha. कंठ में जिनके विराजता हलाहर, गंगा जलम शीश पे बाए अंग विराज जिनके गिरिजा पत्नी स्वयं पार्वती, नंदी कार्तिक गणपति के सहित केदारनाथ प्रभु, केदार गिरि पे सदा ही रहते, करते सदा मंगलम। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पार्वती नाथ, सर्वमंगल मंगलम। ओम शांति शांति शांति। So once again, a very warm welcome and thank you so much for joining us this evening in Satsang. So as we begin our Satsang this evening, I'd like to ask the following persons to render a bhajan or chant for us. Auntie Chansi, if you could do a song for us, followed by Auntie Indra and Auntie Mala, and then we will continue from there onwards. Thank you. Sitaram. Namaste, everyone. Guru Deva, Priya Deva, Sai Deva, Dayamaya. Guru Deva, Priya Deva, Sai Deva, Dayamaya. विभूति सुंदर शशांक शेखर, साई शंकर दया करो, साई शंकर दया करो। गुरुदेवा प्रिय देवा, साई देवा दयामया। गोकुल नंदन साई गोपाला, रघुकुल भूषण साई रामा। हे मरनांतक दया करो, हे मरनांतक दया करो। गुरुदेवा प्रिय देवा, साई देवा दयामया। गुरुदेवा प्रिय देवा, साई देवा दयामया। विभूति सुंदर शशांक शेखर, साई शंकर दया करो, साई शंकर दया करो। गुरुदेवा
देवा प्रिय देवा साई देवा दयामया गोकुल रंजन साई गोपाला रघुकुल भूषण साई रामा हे मरनाथ दया करो हे मरनाथ दया करो गुरुदेवा प्रिय देवा साई देवा दयामया। नमस्ते। Sitaram, everyone. भीगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होई हमारो कौन सो संकट मोर गरीबों को जो तुमसे नहीं जाता है तारो। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो महाराज। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो महाराज। तन में तुम्हारी शक्ति विराजे मन भक्ति में लीना जो जन तुम्हारी शरण में आई जो जन तुम्हारी शरण में आए दुख दर्द हर लीना हनुमत दुख दर्द हर लीना। महावीर प्रभु हम दुखियन को महावीर प्रभु हम दुखियन को तुम हो गरीब निवार हनुमत तुम हो गरीब निवार हनुमत। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो महाराज। राम लखन वे दीहि तुम पारा सदा रहे हर्षाई हृदय चीर के राम सिया का हृदय चीर से राम सिया का दर्शन दिया करा दे हनुमत दर्शन दिया करा दे। जो कर जोड़ हरज हनुमंता दो कर जोड़ हरज हनुमंता कहियो प्रभु से आज हनुमत कहियो प्रभु से आज हनुमत। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो महाराज। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो महाराज कृपा करो महाराज। Sitaram. Sitaram, devotees. If you hear any traffic, it's because I'm on the way home. Jai Ganesh Gananath Dayanidhi Sakala Vigana Kar Dur Hamari Pratama Bhare Jo Dhyan Tumhara इसके पूरन कारज सारे। जय गणेश
गणनाथ दयानिधि सकल विघ्न कर दूर हमारी रिद्धि सिद्धि चमन दुलावे रिद्धि सिद्धि चमन दुलावे मूषिक वाहन परम सुखावे जय गणेश गणनाथ दयानिधि सकल विघ्न कर दूर हमारी लंबोदर गजवरन मनोहर लंबोदर गजवरन मनोहर कारा त्रिशूल पर शूरधारी जय गणेश गणनाथ दयानिधि सकल विघ्न कर दूर हमारी ब्रह्मानंद सहाय करो निधि ब्रह्मानंद सहाय करो निधि भक्त जनों के तुम रखवारे भक्त जनों के तुम रखवारे जय गणेश गणनाथ दयानिधि सकल विघ्न कर दूर हमारी सकल विघ्न कर दूर हमारी सीताराम Thank you very much to all those that would have sung before. As we continue along, I'd like to ask Sania to do the next bhajan for us, followed by Mrs. Ramdat and Mrs. Singh. Thank you. मंगल मूर्ति राम दुलारे आन पदाब तेरे द्वारे हे बजरंग बली हनुमान हे महावीर करो कल्याण हे महावीर करो कल्याण तीनों लोक तेरा उजियारा दुखियों का तुनका जसंवारा तीनों लोक तेरा उजियारा दुखियों का तुनका जसंवारा हे जगवंदन केसरी नंदन हे जगवंदन केसरी नंदन कष्ट हरो हे कृपा निदान कष्ट हरो हे कृपा निदान मंगल मूर्ति राम दुलारे आन पदाब तेरे द्वारे हे बजरंग बली हनुमान हे महावीर करो कल्याण हे महावीर करो कल्याण तेरे द्वारे जो भी आया काली नहीं कोई लौटाया तेरे द्वारे जो भी आया काली नहीं कोई लौटाया दुर्गम काज बना बनहारे दुर्गम काज बना बनहारे मंगलमय दीजो वरदान मंगलमय दीजो वरदान मंगल मूर्ति राम दुलारे आन पदाब
तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण। हे महावीर करो कल्याण, करो कल्याण, करो कल्याण। सीताराम। Jai Sitaram, everyone. हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता। सिया राम के काज संवारे, सिया राम के काज संवारे। मेरा करो उद्धार, पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। अपरंपार है शक्ति तुम्हारी, तुम पर लीजे अवध बिहारी। अपरंपार है शक्ति तुम्हारी, तुम पर लीजे अवध बिहारी। भक्ति भाव पे ध्याव तू है, भक्ति भाव से ध्याव तू है। कर दुखों से पार, पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। जपत निरंतर नाम तिहारा, अब नहीं छोरू तेरा द्वारा। जपत निरंतर नाम तिहारा, अब नहीं छोरू
तेरा द्वारा। राम भक्त मोहे शरण में लीजे, राम भक्त मोहे शरण में लीजे। भव सागर से तार पवन सुत बिनती, बारंबार पवन सुत बिनती, बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत बिनती, बारंबार पवन सुत बिनती, बारंबार पवन सुत बिनती, बारंबार। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। Sitaram, everyone. It's really a spiritually charged period for all worshippers of God, be they Christians, Muslims, or Hindus. So I implore all of us to make the best use of the time that we have. रघुबन से हो राम, मेरे मन में बसो, हृदय में बसो, मेरे मन में बसो। रघुबन से हो राम, मेरे मन में बसो, हृदय में बसो, मेरे मन में बसो। रघुबन से हो राम। सीता मेरी माता, पिता मेरी राम, लक्ष्मण धनुष राय कर बाण। गले मेरी तुलसी, मुख मेरी राम, हृदय बिराजे स्वामी सलेग्राम। हृदय बिराजे स्वामी सलेग्राम। रघुबन से हो राम, मेरे मन में बसो, हृदय में बसो, मेरे मन में बसो। रघुबन से हो राम। हाथ न उपरा दुरत निशान, सुर नर मुनि जन आए है बीमान। बंदो सागर तेरे है पखन, सीता जी की खबर को पताए हनुमान। सीता जी की खबर को पताए हनुमान। रघुबन से हो राम, मेरे मन में बसो, हृदय में बसो, मेरे मन में बसो। रघुबन से हो राम। तोरी गए लंका, फिर गए आन, भक्त विभीषण पाए बिसराम। आगे आगे राम लक्ष्मण, पीछे हनुमान, आए है अयोध्या पुष्प विमान। आए है अयोध्या पुष्प विमान। रघुबन से हो राम, मेरे मन में बसो, हृदय में बसो, मेरे मन में बसो। रघुबन से हो राम। तुम्हारो जप तप तुम्हारो है ध्यान, रघु जी की सुमिरन सीता जी की ध्यान। क्रीता मुकुता कुंडल बन्म, भाल तिलक सोहे नयन विशाल। भाल तिलक सोहे नयन विशाल। रघुबन से हो राम, मेरे मन में बसो, हृदय में बसो, मेरे मन में बसो। रघुबन से हो राम,
मेरे मन में बसो, हृदय में बसो, मेरे मन में बसो, रघुबन से हो राम. Thank you. Okay, thank you very much. So at this point, I'll hand over to Sania for our Bachcho Ka Khan segment. Sitaram everyone and welcome to Bachcho Ka Khan. Tonight we will be starting off with a prayer. Om Sahanao Bhavatu Sahanao Bhunattu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavaditamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti 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 Hari Om Shri Gurubhyo Namaha Hari Om. Tonight our presenters are Salim, Jada and myself. First we will have Salim doing a discourse on Lord Hanuman. Then Jada will be reading a feature that is entitled Significance of Hanuman Jayanti. Lastly, I will be singing the Hanuman Chalisa. I will now pass over to Salim. Sitaram. Lord Hanuman is still alive and roams around the world. He is present where Ramayana is recited with devotion. He answers the daily prayers and worship of his devotees. He fulfills their desires. Hanuman Sankata Moksha as he removes trouble from his devotees. Merely by remembering the name of Hanuman, a devotee can get rid of all troubles in life. Hanuman Upasana, prayers and worship is performed daily for good intelligence, fame, strength, courage, and for good health. One can find a solution and get relief to even the most tiring problem in life if a devotee has the unwavering devotion of Hanumanji. To alleviate problems in life, chant Hanuman Chalisa or Bajrang Ban daily. It is believed that chanting any one of the prayers daily with utmost devotion will help in achieving peace and prosperity. Along with chanting the prayer, one should show kindness towards all living beings. For peace and prosperity in life, a devotee should read Sundarkan from Ramayana. Sundarkan is the fourth main chapter in the Ramacharita-manas. This is the most widely read chapter in the Ramayana because it contains the stories of Hanumanji. The chapter narrates the strength, courage, power, intelligence, valor, bhakti, and humor of Lord Hanuman. Listening or reading Sundarkan motivates and provides positive strength to a person. Each doha in the Sundarkan contains hidden symbolism. It is filled with advice and ideas on how to face problems in life. Hanumanji is ever pleased to listen to Ramayana, and his presence is felt in places where it is read with devotion and piety. A devotee should chant the mantra Om Shri Hanumate Namaha 108 times daily. This mantra helps in keeping out all kinds of negative energy. Unwavering devotion will always be answered. But the problem in Kali Yuga is that we doubt our own prayers. We first want to know about the benefits of a prayer. Lord Hanuman got everything in life through the unwavering devotion to Sri Rama. So instead of focusing on the benefits and results, first develop true devotion. Remember him always. Jai Sri Ram. Now I will be singing the Hanuman Chalisa.
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारि बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन बिराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ भद्र और ध्वजा विराजे कामदेव मुंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहिं दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संवारे लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हरषि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बधाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई सहस बदन तुम रोजस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद शारद सहित अहीसा चम कुबेर दिगपाल जमाते कवि कोविद कहि सके कमाते तुम उपकार सुग्रीव मिकीन्हा राम मिलाय राजपद दीन्हा तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर बै सब जग जाना जुग सहस्र जो जन पर भानु लियो ताहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि चल दिलांबि गए अचरज नाहि दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते राम दुलारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारे शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज सम्हारो आपे तीनों लोक हांक तेम कापे भूत पिशाच निकट नहीं मावे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरै सब पीरा जपत निरंतन हनुमत बीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम बचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता
राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत कालु रघुबर जाए, जहम जन्म हरि भक्त कहाय। और देवता चिंतन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाय। जो सत बार पात कर कोई, जो दही बंदी महासुख होय। जो यह पद हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महांदेरा। पवन तनय संकट हरना, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। सीताराम। Entitled Significance of Hanuman Jayanti. About Hanuman Jayanti. Hanuman Jayanti falls on the Shukla Purnama of Chaitra month. Lord Hanuman is one of the most revered gods. He is an incarnation of Lord Shiva. Lord Hanuman is the greatest disciple of Lord Ram. He was born to Kesari and Anjani. Hanuman is known as an ideal karma yogi for his fearless, selfless service, humility, and devotion for Lord Rama. Hanuman Jayanti is an important festival for Hindus. He is the symbol of strength and energy. Hanuman can assume any form at will, wield rocks, and move mountains. He is worshipped as a deity with magical powers and the ability to conquer evil spirits. Significance of Hanuman Jayanti. Devotees worship Lord Hanuman as a divine creature. This celebration has lots of importance to brahmacharis, wrestlers, and bodybuilders. He is known by many names such as Bhajarangabali, Pavana Sutta, Mahavira, Bali Bhima, Anjana Sut, Sankatamochan, Anjaneya, Maruti, Rudra, and much more. Hanuman is the 11th Rudra avatar of Lord Shiva. He has devoted his life for Lord Ram and Sita. The devotees of the Lord Hanuman pray to him for their bright future. Legend. According to legends, he was born as a monkey god to serve Lord Ram. Once Lord Ram had saw goddess Sita applying sindoor on her forehead. Hence, he asked her the reason. Goddess Sita explained to him that she applied the sindoor to ensure a long life for Lord Ram. Hanuman then smeared his entire body with sindoor to ensure Ram's immortality. Hence, on this day, devotees visit temples and apply sindoor on their forehead from the Hanuman's body, as this is considered to be good luck. As per another legend, a great sage Angira was to visit the king Indra. He was welcomed with the dance performance that was presented by damsel Punjakstala. However, sage was not interested in the dance and he started meditating. Later, he was asked by Indra about the performance of the dance. He replied, "I was in deep meditation to my Almighty because I have no interest in such dance." Damsel started disappointing the stage. Hence, she was cursed by the Angira. "You shall degrade to earth from heaven. You will be born as a female monkey in the mountain forests." She then felt sorry and regretted. The merciful saint supported her through blessings. "A great devotee of Lord will be born to you. He will forever serve Lord." Later, she was born as a daughter of Kunjar, king of the monkeys, and got married to Kapiraj Kesari of the Mount Sumeru. She gave birth to Hanuman. It is believed that Lord Shiva took rebirth as a human being on the earth as Hanuman because he could not serve to Lord Ram by being in his real form. The Vadanas were very happy and celebrated his birthday with great enthusiasm. Celebrations and rituals.
On Hanuman Jayanti, people observe fast, meditate, and practice charity. They also read the Hanuman Chalisa. Hanuman Jayanti is very auspicious for wrestlers and bodybuilders. Bodybuilding and wrestling competitions are organized in villages. The devotees visit Hanuman temples on this day in the early morning, apply vermilion on Hanuman idol, recite Hanuman Chalisa, offer prasad of laddu, and perform arti by chanting mantras. After the puja, people apply red sindoor to their own forehead and distribute laddu prasad among the people. In Tamil Nadu and Kerala, Hanuman Jayanti is celebrated in Margashri month due to the belief that Lord Hanuman was born on Amavesha in the Margashri month. In Odisha, it is celebrated on the first of the month in Vaishakha. In Karnataka and Andhra Pradesh, Hanuman Jayanti is celebrated on the 10th day of Vaishakha month. Thank you, and Sitaram. Thank you, Jada and Celine. It has always been an honor to have you present on Bachu Kakan. We all decided to do items on Lord Hanuman since Hanuman Jayanti is this Saturday. Hope you all enjoyed our segment. Sitaram. Thank you very much, Sanya, and all of our kids for Bachoka Khan. So I believe Seema has gotten her microphone sorted out. So we'll have a bhajan by her. Then we'll pass on to our catechism or guidelines on our way of life, our Sanatan Dharma by Auntie Chancy. Thank you. Sitaram, everyone. Shri Rama Ayodhya mein aaye, chalo re Sakhi Ram se milo. Chalo re Sakhi Ram se milo. Ho Shri Rama Ayodhya mein aaye, chalo re Sakhi Ram se milo. Chalo re Sakhi Ram se milo. राम लक्ष्मण जन का दुलारी, राम लक्ष्मण जन का दुलारी, हनुमान संगा में आए, चलो रे सखी राम से मिलो. चलो रे सखी राम से मिलो. हो श्री राम अयोध्या में आए, चलो रे सखी राम से मिलो. चलो रे सखी राम से मिलो. माता सुमित्रा आरती उतारी, माता सुमित्रा आरती उतारी, नयनन नीरा बहारे, चलो रे सखी राम से मिलो. चलो रे सखी राम से मिलो. हो श्री राम अयोध्या में आए, चलो रे सखी राम से मिलो. चलो रे सखी राम से मिलो. धूप दीप नैवेरा चाहती, धूप दीप नैवेरा चाहती, उनके चरण प्रकारे, चलो रे सखी राम से मिलो. चलो रे सखी राम से मिलो. हो श्री राम अयोध्या में आए, चलो रे सखी राम से मिलो. चलो रे सखी राम से मिलो. तुलसीदास कर जोरा कहते हैं, तुलसीदास कर जोरा कहते हैं, हरि गुण गाता चलो रे सखी राम से मिलो. चलो रे सखी राम से मिलो. हो श्री राम अयोध्या में आए, चलो रे सखी राम से मिलो. चलो रे सखी राम से मिलो. चलो रे सखी राम से मिलो. Thank you. Namaste, everyone. We're really having a very festive connecting through bhajans this evening, which is absolutely wonderful. So last week and week before last, I think we were looking at the concept of duty in the Hindu tradition. And I will
I will continue to explore this topic. One's own duty, imperfectly performed, is better than the perfectly performed duty of another. These are the words of Lord Krishna to Arjuna when Arjuna was morally conflicted about fighting on the battlefield of Kurukshetra. In our tradition, the concept of duty is fundamental to spiritual growth, and the Lord raises the issue of courage, valor, and resolve when performing one's duty. All of these are fundamentally undergirded by dharma, or right action. Our duty as Hindus and as human beings is to fulfill our responsibilities and duties based on dharma. This goes beyond our occupation, but goes to our duty as human beings. Sometimes performing our duty of standing for truth and righteousness requires courage and strength. It may mean us standing alone, going against the tide, especially in this age of Kali. As parents, we have a responsibility and a mandate to live and teach by example, as well as to leave a legacy that our children could be proud of. We often hear the question, for what would you be remembered? You know, a lot of times when we go to funerals, this question is posed. I wonder how many of us really think about this and concern ourselves with doing something about it. What type of actions define us as human beings? Are we selfish or selfless? Do we act to assist those in need? Do we stand against corruption and illegal activity, such as bribery, both giving and receiving? On our passing, would we be fondly remembered as compassionate, caring people, or infamously remembered as dishonest, uncaring, and filled with greed, never caring for anyone but ourselves? Or almost as bad, not even remembered. We pass through this world invisible and innocuous, not making any lasting positive contribution to those around us. The Lord exhorts us to perform our temporal duties, our jobs, our family obligations, social obligations, etc., to the best of our ability. But all of these activities are to be performed under the overarching cover of dharma. Our life should be dictated and informed by our spiritual values, irrespective of where we may be, what fora, what environment. Our values should determine our behavior and actions in all spheres of life, not just in religious settings. An important concept was introduced by Lord Krishna with respect to duty, and this is the concept of swadharma or swadharma. This simply means our actions, our duties, should be determined by one's attainments and temperaments, or your swabhava. This can be interpreted in a number of ways. In the simplest of terms, one's qualifications and one's natural abilities, one's temperament should determine one's occupation, vocation, and therefore duty. From an economic and social point of view, this is the most logical and practical prescription for maximum efficiency. If one has a mind and temperament that is conducive to business and making money, one should not be in medicine, one should not be in spirituality, teaching, etc. One should engage in business. Can you imagine? Well, I know you can, because we are faced by this every day. Medicine, you have a doctor who is not primarily concerned about patient welfare, but rather
increasing his profit margin. In spirituality, you may have a priest, a pundit, imam, etc., whoever it may be, only interested in money and not spirituality. In teaching, we know about people who are not interested in education and the welfare of children, but rather how to make more money with private lessons. And well, we know how it goes, everybody with children. As parents, we should assist our children in career choices. Understanding our children's temperament and innate tendencies could go a long way in ultimately creating children who, as adults, gain fulfillment and happiness in their professions, rather than regard their jobs as a burden. I'm certain you know many, I certainly do, who have what are regarded to be prestige or prestigious jobs, doctors, lawyers, engineers, etc., and are unhappy and unfulfilled in their professions. This is where a person's innate tendencies, their temperament, their svabhava are not in sync with their swadharma, and they do not mesh with their chosen careers. Swadharma and svabhava are the most logical, practical, and sensible approach to action, and therefore duty. With this, I thank you. Namaste. Thank you very much, Auntie Chancy. So as we continue along, we'll have some more bhajans at this point in time. If there's anyone who would like to do a bhajan and you haven't gotten the opportunity to do so, of course, the floor is open. I'd like to ask Auntie Indra to do another bhajan for us, followed by Mrs. Ramdat. Thank you. चीर के छाती बोले अपने पवन पुत्र हनुमान, बोलो पवन पुत्र हनुमान, मेरे मन में बसे है राम, मेरे तन में बसे है राम, मेरे मन में बसे है राम, मेरे तन में बसे है राम। चीर के छाती बोले अपने पवन पुत्र हनुमान, बोलो पवन पुत्र हनुमान, मेरे मन में बसे है राम, मेरे तन में बसे है राम। सीता हर किया रावण ने प्रभु सीतिया खुलाए, हनुमान ने सीता जी का प्रभु संदेश सुनाए, हनुमान जी करते आए, हनुमान जी करते आए प्रभु की गुणगान, प्रभु पवन पुत्र हनुमान, मेरे मन में बसे है राम, मेरे तन में बसे है राम। लागी लक्ष्मण जी को शक्ति देखे प्रभु घबराई, भोर की पहले हनुमान जी दूल्हा गिर ले आए, उठ बैठे लक्ष्मण की आए, उठ बैठे लक्ष्मण लेकारे श्री राम का नाम, बोलो पवन पुत्र हनुमान, मेरे मन में बसे है राम, मेरे तन में बसे है राम। बानर सीने देखे रावण किसी ने घबराई, पलक झपकते
हनुमान ने लंका में आग लगाए। लौट प्रभु की साथ मिटा करे, लौटे के प्रभु की साथ मिटा के रावण के अभिमान। बोलो पवन पुत्र हनुमान, मेरे मन में बसे है राम, मेरे तन में बसे है राम, मेरे मन में बसे है राम, मेरे तन में बसे है राम। चीर के छाती बोले अपने पवन पुत्र हनुमान, बोलो पवन पुत्र हनुमान, मेरे मन में बसे है राम, मेरे तन में बसे है राम, मेरे मन में बसे है राम, मेरे तन में बसे है राम। सीताराम। जय सीताराम अगेन। तुम बड़े वीर बलवान, महावीर बजरंगी। तुम बड़े वीर बलवान, महावीर बजरंगी। मैं धरो तिहारी ध्यान, महावीर बजरंगी। पवन पुत्र अंजनी दुलारी, रघुनंदन के प्राण प्यारी। पवन पुत्र अंजनी दुलारी, रघुनंदन के प्राण प्यारी। जय 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 हनुमान, महावीर बजरंगी। तुम बड़े वीर बलवान, महावीर बजरंगी। मैं धरो तिहारी ध्यान, महावीर बजरंगी। रामचंद्र के काज सवारे, लंका जरा कर सिया सुधिलाए। रामचंद्र के काज सवारे, लंका जरा कर सिया सुधिलाए। पायो अमर वरदान, महावीर बजरंगी। हो पायो अमर वरदान, महावीर बजरंगी। तुम बड़े वीर बलवान, महावीर बजरंगी। तुम ही जायस जीवन लाए, लखन लाल को प्राण बचाए। तुम ही जायस जीवन लाए, लखन लाल को प्राण बचाए। कीन्हो काज महान, महावीर बजरंगी। हो कीन्हो काज महान, महावीर बजरंगी। तुम बड़े वीर बलवान, महावीर बजरंगी। मैं धरो तिहारी ध्यान, महावीर बजरंगी। बोलो जय 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 हनुमान, महावीर बजरंगी। बोलो जय 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 हनुमान,
महावीर बजरंगी हो जय 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 हनुमान महावीर बजरंगी। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। Okay, thank you very much. And to all those who would have participated so far, thank you very much. I'll do a bhajan and then I'll ask Auntie Chancy to lead us in closing. हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता, सिया राम के काज सवारी, सिया राम के काज सवारी। मेरा पर उधार, पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। अपरंपार है शक्ति तुम्हारी, तुम पर रीछे अवर विहारी। अपरंपार है शक्ति तुम्हारी, तुम पर रीछे अवर विहारी। भक्ति भाव से द्याऊ तो है, भक्ति भाव से द्याऊ तो है, कर दुखों से पार, पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। Sitaram. Namaste again, everyone. Before I start our closing mantras, I would just like to, and I know this will be on behalf of everyone, I would like to thank Govind and Shabana for hosting Connecting Through Bhajans every single week. This is a immense sacrifice. We know life is very busy. So many people have so many things going on, but yet still. And because of them, we have this forum that we can come together and we can actually, join together as a family to do something that is uplifting. Uplifting, sending out very positive vibrations out there.
So as we recite our closing prayer, let us focus. You know, there's a saying that we must always be grateful. Be grateful and thankful for whatever, you know, thankful for small mercies. But we are very, very fortunate in Trinidad and Tobago. There may be many things that are wrong, but look at how we have the freedom to worship, freedom to assemble. We have access to a Monday. We have access to you know, forums like this. And this is something that we should never take for granted. So let's clasp our hands, close our eyes. Om Mangalam Gurudevaya Mangalam Jnanidayane Mangalam Partivasaya Mangalam Satyasayane Tvameva Mata Chapita Tvameva Tvameva Bandhu Chasakha Tvameva Tvameva Vidya Dravinam Tvameva Tvameva Sarvam Mama Deva Deva. Let's pray for the welfare of all beings in this world, human and non-human alike. We must always be selfless, never selfish. Om Samasta Loka Sukhino Bhavantu Samasta Loka Sukhino Bhavantu Samasta Loka Sukhino Bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Namaste everyone. Have a safe week.